Hello students. So I'm live again. Join me fast so that we can start our session for today. And what we are going to study today is nothing but geometry. We are going to discuss about lines, angles, triangles, rays, line segment, all this. So if you belong to junior group, between under grade 5 or in grade 5, then hi. Then join fast so that we can start our session for today. Four of the students have joined. Join it fast. Hey students, join fast. Okay, in geometry, basically geometry is nothing but understanding shapes around us, right? So when we just want to know the type of shapes, things, about the nature of these shapes, we must know geometry, right? So for geometry, we first of all must know about, it starts with a single. What is this? This is nothing but a point, right? This is a point. And when we join lots of points together, it forms a line. Let's suppose we are joining, this is a point, just a second. Okay. Let's suppose this is a point, another point, another point, another point. If we join these points together, we'll get nothing but a line, right? So this is a line. When we join lots of points together, we form a line. This is a point. This is a point, and this is nothing but a line. Now, if we split it from 2 points, if we just cut it like, and take this part out here, we have just taken a part of a line out, and this part of a line is called line segment. This is called line segment. Why is it called line segment? Because it is the part or the segment of a big line. Now, if I just split this line from any single point, let's suppose I have split it. Cutting out a part is different than splitting. Splitting means just cut from a single point. Just cut here. And it has a different name, then it's called a ray. Ray, line segment, and point. So these are some very basic things, very basic terms we must know when we are studying about geometry, right? So point is nothing but a dot on a plane. Then line. How do we differentiate between a line and a line segment? A line has 2 arrows. See,
these arrows. One is this and another one is this. A line has two arrows. What these arrows suggest? These arrows suggest us that this line is a never-ending line. That means it is extending on both the sides. It is extending this side as well as this side too. Arrows show us extension of this line. But these arrows are missing here. Right? These arrows are missing here. It has something else. It has two end points, right? So in place of arrows, a line segment has two end points. Line segment contain two end points, whereas line contains two arrows. Arrows means they are extending on both the sides. Now, let's focus on this ray. A ray has one end point and another arrow. What this means? This means that a ray can extend in a single direction only, in one direction only. If something extends in one direction, it will be a ray. If the thing is extending on both the directions, it will be a line. And if it doesn't have a capacity to extend, it will be a line segment. Segment means part of something. It is line segment, that means it is a part or a segment of a line. So hopefully you'll be able to understand this. Whoever is joining, just say hi, hello, and share your name as well as class so that I can communicate with you. Now, if I move forward, if I move some about line, you must have seen different types of line. Some are straight line, some are curvy line, some are spiral line, some are zigzag line, some are very straight standing line, some are slanting line. These all are different types of lines. As they represent themselves, they have different names. Let's say, for example, this is called slanting line. This line is called slanting line. This line is called sleeping line. This is called sleeping line. This is called zigzag line. This is called standing line. And this is nothing but a spiral. So it is called a spiral line. This is called a wavy line. A wavy line. And we have one more. This is called a curvy line. What? A curvy line. So these all are types of lines. Fine. These are nothing but usi ke according they have some names. Now, after types of line, if we have a pair of line, if we have pair of lines, see, if two lines are like drawn in such a way that they will never meet, this is line 1 and this is line 2, and they have equal gap between them at any point or every point. They have equal gap between them. What this means?
This means that they are not going to meet at any point. If you have a pair of line that is not going to meet at any point, it will be parallel line. We'll name it as parallel lines. When we have a pair of line which are not going to meet at any point anywhere, we'll call them as parallel line. If we have two lines in such a way that they cut at some point. If two lines are in such a way that they cut at some point, they will be, as they are meeting or intersecting at a point, they will be intersecting lines. Intersecting lines. Do you know, if these two lines intersect at 90 degree, that means if two lines intersect in this way, one is standing and another one is sleeping. If they are intersecting in this way, making 90 degree, we'll call them perpendicular lines. We'll call them perpendicular lines. So we have parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines. These are some pair of lines. After lines, we'll discuss about angles. Do you know, when two lines or rays intersect at a point, they form an angle. Let's suppose this is a ray and this is another ray. They are intersecting at point O, right? So these two rays are intersecting at point O and they are making nothing but an angle. They are representing an angle. This is the turn between two rays, and the turn decides measure of the angle. Angle has a vertex. This point is nothing but a vertex, and these two rays are called as arms when they form an angle. So an angle has a turn. This is a turn. Angle has three things: turn, vertex, and arms. Now, according to the amount of turn or the measure of turn, we can classify angle as acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, and complete angle, as well as zero angle. Let's see what's all this. So when we talk about types of angles, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम स्टार्ट करेंगे जीरो एंगल से. When two rays, let's suppose this is ray overlapping on first ray. आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है, या मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती हूँ. येलो वन, दिस इज ray 2. As these two are overlapping, this is nothing but a zero angle. जीरो एंगल कब फॉर्म होता है? जब टर्न हमारा 0 डिग्री हो. When turn is 0 डिग्री, बिल्कुल भी आर्म्स के बीच में जरा भी गैप नहीं है, तो वो हमारा जीरो एंगल हो जाएंगे. नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो रे 1 ये हो गई और ये आपकी रे 2 हो गई. तो इनके बीच में कुछ गैप है, टर्न है. इट इज नथिंग बट acute angle. Acute angle. यही टर्न जब आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे मीट करता है,
let's suppose this is first ray and this one is ray 2. तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और इसे हम कहते हैं राइट एंगल. 90 डिग्री इज राइट एंगल. राइट एंगल से छोटा अक्यूट एंगल आ जाएगा और जीरो एंगल से बड़ा. तो अक्यूट एंगल का जो मेजर होता है will represent it as AA for acute angle. It will be greater than 0 degree and less than 90 degree. Okay? तो मतलब कि 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री 2 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 89 डिग्री तक हमारा अक्यूट एंगल लाई करेगा इस रेंज में. ओके, नाउ we have studied about zero angle, acute angle, right angle. अब 90 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री से आगे हमें मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल. हम देखते हैं तो हमारा ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल रे. नाउ more than 90 degree it will be like this. It would be like this. तो ये जो 90 डिग्री से ज्यादा टर्न है दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. आफ्टर ऑब्ट्यूज एंगल हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का फैलाव बिल्कुल एक दोनों रेज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं एंड दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री. तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है. तो ऑब्ट्यूज एंगल को हम एज ओ ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओ ए हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. दैट मीन्स जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका मेजर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल 91 to 170 नहीं बेटा. ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 91 हो सकता है, 92 हो सकता है एंड लिमिट करेगा 179 डिग्री तक. तो ये जो रेंज आपको दिख रही है इस रेंज के अंदर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा. We have learned about zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, and the last one is not last. आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे कर देती हूँ. Now you'll be able to see things here. 180 degree, but less than 360 degree. And another one is like this. Okay. So the turn will be this. This is reflex angle. Reflex. Reflex angle has the measure greater than 180 degree but less than 360 degree. And lastly we have complete angle. Complete angle, that means complete angle will look similar like zero angle. One is this and another one will just overlapping on this and but it will show this turn. तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कोई टर्न नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर हमें एक टर्न शो हो रहा है और वो टर्न हमें शो हो रहा है 360 डिग्री का एंड दिस इज कंप्लीट एंगल. This is complete
complete angle. So this was all about types of angles. Angles with no turn is called zero angle. With a turn between 1 degree to 89 degrees is called acute angle. If turn is 90 degree, it will be right angle. Then we have obtuse between 90 and 180. That means it starts with 91 and it maximum value of obtuse angle could be 179 degree. Now, after this, after obtuse angle, we have straight angle and then reflex angle. So these all are the types of angles. Now, after types of angles, we'll discuss triangles. After types of angles, we'll discuss triangles. What are triangles? Triangles are polygons with 3 angles. That means if we draw this shape, this is nothing but a triangle. A triangle has 3 angles which are as 1, 2 and 3. What else about triangle? A triangle has not only 3 angles but 3 sides too. So this is side 1, right? This is side 2 and this is side 3. A triangle has 3 sides, 3 angles and one more thing, 3 vertices. 1, 2 and 3. Right? So this is about a triangle. We'll label these vertices. So how do we label? Let's suppose this vertex is A, this is B, and this is C. After labeling vertices, we can name this triangle. And for naming this triangle, we'll first of all use a symbol. This is the symbol for a triangle. And how do we name a triangle? We'll name it as A, B, C. You can name it as B, C, A or A, C, B. Doesn't matter, doesn't affect this triangle only, we can name it. Yes, we can classify triangles too. So let's see how we can classify triangles. Classification of triangles is basically based on, it has 2 criterions. One is according to sides and another according to angles. As per sides and angles. So according to sides, see, if first is a triangle with all sides equal. If all sides equal, it will be called as equilateral triangle. Equilateral triangle means all of its sides will be equal. This, all are equal. All sides are equal. That means equilateral triangle. Second is isosceles
triangle. Isosceles triangle contains two sides equal and one different. Then it comes third one, that is scalene triangle. Scalene triangle has all sides different. None of the side is same. So it is nothing but scalene triangle. Now, after sides, we'll discuss as per angles. First is acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle is basically a triangle with all acute angles. All acute angles, it will be a acute angle triangle. क्या इसका ये वाला एंगल आपको obtuse लग रहा है? I want to draw it again. A triangle like this. See, 1, 2, 3. All angles are acute. Then next one is right angle triangle. Right angled triangle. Right angle triangles, first of all we'll draw a right angle and then join it like this. A triangle which contain a right angle will be named as right angle triangle. And the last one is obtuse. Concept आप समझ गए होंगे. Obtuse angled triangle. The triangle with an obtuse angle. So, oh sorry, I've drawn an obtuse angle which I need not to draw. Okay, so obtuse angle triangle will be like this. So this is the term which shows obtuse angle, right? So triangle containing obtuse angle will be an obtuse angle triangle. A triangle with the right angle will be a right angle triangle, and if a triangle contains all angles acute, it will be an acute angle triangle. Fine. So this is all about types of triangle according to angles, and here according to side. When all sides of a triangle are equal, it will be equilateral triangle. So equilateral means all sides equal. Two sides equal. No side equal. See, this is how we classify triangle as per the side and angles. After this, we have a very interesting thing, that is counting number of triangles. So here the competition starts after having a rough idea about geometrical terms or some idea about geometry. Counting number of triangles. So let's suppose I draw this. And if I ask you how many triangles are there, you will say one, right? Definitely one triangle. Now, if I draw a triangle like this. Now, if I ask you how many triangles are there in this figure, figure 2, can you tell me how many triangles are there? Tell me. Just think and tell me.
Can you tell me? Adhyan has said 2. Okay. Adhyan ने 2 कहा है and Mannat has said 2. So anyone else who want to answer? 30 seconds more. If you want to answer, how many triangles are there in this figure? How many triangles are there in this figure? Do fast. Participate. Okay, fine. So let's count number of triangles. For counting, what we'll do, this is first the inner one. Okay. Let me change the color of the ink. Okay. Now, this is first, this is second. It contains 2 triangles. That means both of the student must have answered it correct. But no, you both have answered it wrong. How? This is first triangle, this is second triangle. And the outer one is the third triangle. That means this shape contains 3 triangles rather than 2. We can see 2, but it contains 3 triangles. 2 triangles are inside and another one is the big triangle in which these 2 triangles are aligned. Okay. So this shape contains 2 triangles. Now I'll give you another question. How many triangles are there in this shape? Shape number 3. It contains 3 triangles. Now, how many in this? Answer me. Adhyan, Mannat. Hemlata Sharma. What's your name? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Hemlata Sharma. One is saying Mannat. Hemlata Sharma is saying 5. Anyone else who want to participate? Adhyan, if you're here, then answer me. Okay, now the time is over. Let me answer this. Let's see किसने correct answer किया है. तो सबसे पहले inside triangles count करते हैं. This is the छोटा वाला triangle is 1. B है, right? But आपका ये triangle है, हाँ? तो ये हो गया triangle 3. छोटा वाला 1, 2 and this is 3. और जब आप कंप्लीट ट्राइंगल ले लोगे इस तरह से तो ये हो जाएंगे 4 ट्राइंगल्स. तो हमारा हो गया अध्ययन ने 5 दिया है, क्या नाम है, मन्नत ने 4 दिया है और हेमलता शर्मा ने 5 दिया है. तो हम देखते हैं 1 2 3 and this shape contain this one including this one is 4. So total number of triangles यहाँ पर हो जाएंगे not 3, not 5, but 4. तो आंसर यहाँ पर जो करेक्ट है वो है मन्नत का. So मन्नत you have scored. अभी कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं. मन्नत ने स्कोर कर लिया है
Mannat has scored 1. I will write H for Hemlata, scored 0. A for Adhyan, who has scored 0. Fine. एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपका फर्स्ट ट्राइंगल आपका हो जाता है छोटा वाला ट्राइंगल, देन दिस वन एंड देन दिस पिंक वन थर्ड, और फिर येलो वाला. 4 ट्राइंगल्स यहाँ पर हिडन है. We don't have 5 or 3 triangles, we have 4 triangles here. Now, I want to draw some difficult shape now. Okay. Now can you tell me how many triangles are hidden there, or total number of triangles here in this shape? Try, students. I'm standing aside. Try to answer. Mannat, Adhyan, Hemlata, try to answer. Hemlata has answered 9. Okay. Mannat has answered 9. And Adhyan has answered 5. Okay. आप हेमलता आप कौन सी क्लास में हो? आप कौन सी क्लास में हो बेटे? अब हम देखते हैं इसका आंसर. मैं आपको 15 सेकेंड्स और देती हूँ. जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आंसर करना चाहते हैं, आंसर इट. एंड you are in 11th grade. Okay, fine. Now I'll tell you how many triangles are in this shape. सबसे पहले हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4. 4 are inside triangles, right? Then now see, we'll write it. First triangle 1 हो, तो ये भी आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. पेयर ऑफ 1 and 2, 1, 2. देन 2 और 3 का पेयर भी आपका एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, और 3 और 4 का भी पेयर आपका एक ट्राइंगल ही फॉर्म करेगा. कैन यू सी? देखते हैं कौन आंसर करेक्ट कर रहा है. तो 4 ट्राइंगल्स तो आइसोलेटेड हो गए. आफ्टर दीज 4 आइसोलेटेड ट्राइंगल्स we will see a pair 1 and 2. Then we have a pair of these two, that means 2 and 3, and then again this 3 and 4, right? After 3 and 4, if we combine 1 2 and 3, see, are they forming a triangle? Yes, 1 2 3 is this forming a triangle. And if we combine 2 3 and 4, 2 3 4 will be okay, 2 3 4 will be basically this triangle. So 2 3 4 is also a triangle. And if we take all means 1 2 3 and 4, so it will be the whole big triangle. That means let's count how many triangles are in this triangle now. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. That means none of you have answered it correct. It contains not 9, not 5, not 8, but 10 triangles. But how? Now, if you have these type of questions in your exam, then how will you quickly solve these questions?
So I'm going to give you a very easiest method to solve these type of triangle. You need not to count them at all. You just have to apply a trick. So what's that trick? I'm just sharing with you. With the help of that trick, you'll be able to count number of triangles without just actually counting them. So you were having a figure like this. This was a figure. We had counted it containing 10 triangles. Now the trick comes. What we'll do, we'll count number of internal triangles. That means this is. So what we'll do now, we'll add them. 4 plus 3 plus 2 plus 1. That's triangles. What you need to do, 1, 2, 3, 4 as per internal angles and internal triangles inside the figure. You have to label it, and after labeling you just have to add all numbers which you have used to label this triangle. हमने 1 2 3 4 लिखा, और जो भी नंबर हमने अंदर लिखा है, हम काउंट करने के लिए हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4. अगर आपका शेप इस तरह से होगा, if you have a shape like this, you will write 1 and 2. We have two numbers here, 1 and 2. इनका सम कर देंगे and we'll get the answer 3. See, अगर इसको हम देखें, 1 तो हमारा इंटरनल हो गया, अंदर हमें 2 दिखाई पड़ रहे हैं, और ये कंप्लीट वाला हमारा थर्ड हो जाएगा. राइट हमारे पास 3 एंगल्स ही हैं यहाँ पर. और अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 10 ट्राइंगल्स थे. 10 ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो रहे हैं वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है. अभी ट्रिक की बात करते हैं. तो हम इनसाइड ट्राइंगल्स को लेबल कर देंगे. हमारे पास 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, और हम 4 plus 3 plus 2 plus 1 करेंगे. 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. So this is your answer. Hope you have then answer me the next. तो यहाँ पर किसी का भी पॉइंट नहीं बढ़ेगा. पॉइंट मिलता है हेमलता 0 अगेन एंड अध्ययन 0 अगेन, बिकॉज इस बार आप सब ने रॉन्ग किया है. तो अभी हम बढ़ते हैं आगे. ठीक है, अभी आप करें. अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो आप फटाफट आंसर कर लोगे. अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो आप फटाफट आंसर कर लोगे. अब देखते हैं कौन आंसर करता है इसे करेक्ट और फास्ट. लेट्स सी. Mannat has answered it 20. Adhyan has answered it 21. Okay. Hemlata, what's your answer? What's your answer? I'm standing aside. Answer it fast. Let's wait for 15 seconds and then I'll discuss this. Let's see who has understood the concept well. किसे समझ आ गया है और कौन करेक्ट आंसर कर रहा है यहाँ पर. Let's see who will answer it correct. Okay, fine. तो हमारा according to our method or trick,
हम लेबलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? नाउ हमें क्या करना है, सम करना है। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, and if we add it, 6 plus 5 11 15 18 20 21 21 is the correct answer, and Adyan has answered it correct. So Adyan, now you have scored 1 point. Now Manat and Adyan have scored same score till now. आगे देखते हैं क्या होता है। No. नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगी। ओके, आपका डायग्राम this. Now this is your next question. Can you solve this and answer? Number of triangles here. How many triangles are hidden here? Just tell me how many triangles are there, are present here in this figure. Tell me fast. Students, solve it fast. Solve. Have you done? Adyan has answered 41. Okay, anyone else? 10 seconds more. अध्ययन का आंसर आया केवल अभी। ओके, मुझे मन्नत का भी आंसर मिल गया है। मन्नत इज सेइंग 42. फाइन, फॉरवर्ड इट फास्ट, फॉरवर्ड इट फास्ट। ओके, लेट मी डिस्कस। सो हियर अभी हमारे पास दो बेसिस है। इस बेस पर देखेंगे, हम भूल जाते हैं कि नीचे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हम बस इतना देखते हैं। तो सेम हमें मेथड अप्लाई करना है। वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 हमें मिल गया 21। अब इस लाइन को आप भूल जाइए, अब आप बात करिए बेस 2 की। बेस 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, right? We'll add it up. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. After adding it up, we'll get 21 again. So total number of triangles will be 21 plus 21. That means 42. 42 वाला आंसर है मन्नत का। सो मन्नत, यू हैव स्कोर्ड 1 मोर पॉइंट। लास्ट में भी शायद मन्नत ही करेक्ट थे। 21, नो, अध्ययन करेक्ट थे, मन्नत ने 28 बोला था। ठीक है, इस बार मन्नत ने एक और स्कोर कर लिया है। अध्ययन यू हैव आंसर्ड इट 41। 41 इज रॉन्ग। आप एक ट्राइंगल से आप पीछे रह गए, इसमें आपके 41 नहीं 42 ट्राइंगल्स हैं। ओके, यहां तक समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम? नाउ अभी अगर आपको, ये तो हमारा ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल काउंट करना है। ये रीजनिंग पार्ट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपका एकेडमिक हो, करियर हो, बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं।
अब अगर मैं कोई दूसरा शेप ले लूं, लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस स्क्वायर एंड एक मैं डायगोनल यहां पर ड्रॉ कर देती हूँ. कैन यू टेल मी हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? Tell me fast, how many triangles? How many triangles बच्चे? Let me drink some water. आप आंसर करो कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? मन्नत एंड अध्ययन 2. बिल्कुल सही. 1 and 2. It contains 2 triangles. Fine. Now, oopsie. If I join this diagonal to, now can you tell me how many triangles are there? Tell me fast. अभी आपने 2 2 बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला. अभी आप बताएं अब कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? बताइए बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं? How many triangles are there in this figure? आंसर आया किसी का? 4 and 6. ठीक है, चलिए देखते हैं. 1 2 3 4. 4 इसका मतलब मन्नत करेक्ट है और अध्ययन रॉन्ग है? नो, दोनों ही रॉन्ग है. कैसे? अब आप देखिए, आपने सिंगल सिंगल काउंट कर लिए. 1 2 3 4. ये तो सिंगल सिंगल है. 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप देखें 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी तो आपका ट्राइंगल ही बना रहा है या नहीं? तो आपका 1, 2 भी आ जाएगा. सिमिलरली 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी आपका ट्राइंगल बना, तो आपका 2, 3 आ जाएगा. 3 and 4 का कॉम्बिनेशन ट्राइंगल बना, 3 and 4, 1 and बना रहा है या नहीं बना रहा है? आप सिंगल सिंगल काउंट कर रहे हैं, आप कॉम्बिनेशंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं. फोकस ऑन कॉम्बिनेशंस टू. जब आप कॉम्बिनेशन पे फोकस करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे. ओके, तो कॉम्बिनेशंस को ऐड करके, इंक्लूड करके आपके पास हो जाते हैं टोटल 8 ट्राइंगल्स. राइट? नाउ चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं. क्या इससे भी काउंट करने की कोई ट्रिक है? मतलब हमें काउंट ना करने पड़े, हम किसी मेथड से फॉर्मूला होते क्यों है? आप बोलते हो मैथ्स में इतने फॉर्मूलाज होते हैं, लर्न करने पड़ते हैं. फॉर्मूलाज इसीलिए होते हैं जिससे कि आपके टास्क को इजी बना सकें, आपकी मेहनत को कम कर सकें. लेट्स सपोज दिस इज अ शेप and these are total triangles including this shape. Can you tell me how many triangles are there? Don't tell me 8 because after 8 तो हमें सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशंस भी हैं. कुछ कॉम्बिनेशन काउंट करके आप बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं और जल्दी जल्दी बताओ. Tell me fast. देखते हैं. I'm going to just wind up the class, the session for today. 12 आंसर आया मन्नत का. ओके, अध्ययन 15. 3 ज्यादा मिल गए अध्ययन को. किसी और को कुछ ज्यादा कम मिल रहे हैं तो आप फटाफट शेयर करो जिससे कि हम आगे बढ़ सकें. फास्ट. Your answer here. The question is, how many triangles are enclosed in this figure? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास हम लेबलिंग कर लेते हैं.
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 तो हमें सिंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, राइट। अब उसके बाद कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अब देखो 1 और 2 मिल करके ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, तो आप 1, 2 बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें जो 1 और 2 मिलकर नहीं बना रहे हैं, बट 2 और 3 मिलकर के ट्राइंगल बना रहे हैं, बना रहे हैं नहीं। उसी तरह से 7 और 6 मिल करके ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। 2 और 3 ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, 7 और 6 ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो 8 तो सिंगल ट्राइंगल्स हो गए। कॉम्बिनेशन में आता है 2, 3, 6, 7, 1, 8 एंड 5, 4। ये 4 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। उसके बाद कोई और आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है वो, अगर आप इस तरह से देखो, 2, 3, 4, 5 ट्राइंगल बना, इसी का ऑपोजिट आप ले लो। ये भी तो 1, 8, 7 से ट्राइंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2, 3, 4, 5 एंड दूसरा ट्राइंगल बन रहा है 1, 8, 7, 6। अच्छा, अब अगर हम ले लेते हैं, इस डायगोनल पे लिया है, अगर हम इस डायगोनल पे लें तो हमें एक ये मिलेगा जो कि इंक्लूड कर रहा है 8, 1, 2 और 3 को, और दूसरा हमारा ये वाला जो कि इंक्लूड कर रहा है 4, 5, 6 एंड 7 को। अब काउंट करते हैं टोटल ट्राइंगल्स, तो 8 तो हमें यहीं पर मिले थे ट्राइंगल। अब बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। ट्रिक हमारे पास यहाँ पर क्या है? अब देखो, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी सिचुएशन ट्रिक से सॉल्व हो जाती हैं। तो अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक हमारे पास जो है, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है इसे सॉल्व करने का। इतनी ज्यादा दिमाग नहीं इतना खपाना है आपको। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, राइट। इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लें। कुछ इस तरह से था। हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इनसाइड जो ट्राइंगल्स हैं उनकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आंसर हमारा क्या आ रहा था? आंसर हमारा आ रहा था 16। दैट मीन्स 16 क्या है? डबल ऑफ 8 है, 8 टाइम्स 2। तो जब कभी भी आपको इस तरह से फिगर मिले, क्वाड्रिलेटरल काइंड ऑफ, और उसमें अगर आपको ट्राइंगल्स पूछ रहे हैं, तो हमेशा डबल ऑफ इंटरनल एंगल्स होगा, डबल ऑफ इंटरनल ट्राइंगल्स, सॉरी नॉट एंगल्स बट इंटरनल ट्राइंगल्स होगा। फाइन। और जब कभी आपको ट्राइंगल का शेप मिलता है, ये ट्राइंगल शेप मिलता है और आपसे एंगल्स सॉरी ट्राइंगल्स पूछता है, तो आप क्या करोगे? काउंटिंग करोगे और उनको सम करोगे। प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं करोगे, प्रोडक्ट यहाँ पर करोगे और हमेशा 2 से डबल कर दोगे इंटरनल ट्राइंगल्स का, और सम कर दोगे डिजिट्स का, जितने भी ट्राइंगल अंदर आ रहे हैं उन डिजिट्स का सम कर दोगे। तो हम वाइंड अप करते हैं। आज के विनर हमारे होते हैं मन्नत। तो मन्नत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर यू। और मिलते हैं 3:30 पर, आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम रोमन नंबर्स पढ़ेंगे, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं रोमन नंबर्स, आप बिल्कुल आ सकते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे कल। सो लेट्स सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।